Can you just give us an example? What are those numbers which gives anybody a support in their life? कौन से ऐसे कुछ mandatory numbers हैं जो चार्ट में हो तो आपको support मिलेगा? I feel 1, 5, 6, 7 are must in life in everybody's. If you don't have 5, 6, 7, वो जब humanitarian या jobs या किसी को help नहीं करेगा, he will not reach success. If once the 9 number person becomes selfish or thinks about himself, वो एक सक्सेस नहीं पहुंचेगी. बट देखो हर नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है. So once you understand the positive as like two is the shape is having two. वो bend है. How does number play important role in anybody's life? Numbers play a very important role because रात को practice of numerology. That is why I feel numerology has gone into the blood direct. नमस्ते एवरीवन, मैं हूं जय कृष्ण विनी, आपके वास्तु एक्सपर्ट. इन आवर सीरीज ऑफ इंस्पिरेशनल जर्नीज इन ऑकल्ट साइंसेस, आई ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट मोडालिटीज, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे काफी सारी फील्ड से मैं आपके लिए गेस्ट लेकर आई. आज की गेस्ट काफी स्पेशल है, स्पेशली द काइंड ऑफ जर्नी शी हैज. शी इज द इंस्पिरेशन ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, आई मस्ट से. आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे. व्हाट इंटरेस्टेड हर to take up occult sciences as a profession. She was a housewife. Now she is a numerologist. She is a palmist. She is an astrologer. She knows lot of modalities in astrology and other occult sciences. और वो काफी कुछ और भी learn कर रही है. She is in the process of learning because learning का कोई age नहीं होता है and learning never stops. So let's welcome today's guest, Sonal Ruparel ji. Ma'am, welcome to our show. Thank you, Krishnaveni ji. Thank you. Jai Mata Di. Since Navratri is being going on, Jai Mata. Jai Mata Di. Thank सबको you for this wonderful platform of bringing me out here. Thank you. Thank you. Thank you for taking time and coming. So today we have a lot of things to discuss about your journey, your interest and passion for these occult sciences. How did it all start, Sonal ji? कैसे start हुआ? It all started like I was born in normal Gujarati middle class family, but I was good in studies. I was born in Mumbai, Vadala, and then my family shifted for business to South Kerala, that is Kochi. There I was a good in studies, but at home, if my parents or my bhabi used to tell me to do work, I never used to like to do household work. The typical ladies, जो रहते हैं ना, तो right from that, I was that little tomboy type. So I didn't want to do that household work or something. I always found out excuses of escaping those household chores. But then I got married. I told my family that I wanted to study further after my degree, BCom degree. Then I did my diploma in computers. Then I asked them that I want to study. But since being born in Gujarati family, they said, "Padha likha ladka to milega nahi," because we often get married to business family, so you won't find. So I said, "Kya fayda? It will be waste." Instead, 23, 22, 23 में शादी कर लो. बस that is your ideal motive or concept of a Gujarati family. कि शादी कर लो, पढ़ाई ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाली है. Not only Gujarati family, I think in India that's been the case. Maybe in the recent years it is slowly changing, but that's how it was before. But yeah. So how did it when you did your college, your schooling, college, then after when you got married, after that did you start working? How was life after marriage? I got married. I was in a big joint family, so I was always telling my house people that whenever you search for a small family or a nuclear family. So that way, I got married to my husband, that is Mr. Hiren Rupare. He is into import-export clearance. Till that time, that time he was BCom. And he had his logistics ka license वगैरह. He was quite
Okay, settle in his So business. Then being married, वही घर का responsibilities. Within 1.5 year, my son came. Then after 2 years, my daughter came. So वही घर का those household work I should do. But that that dream of doing something pinched me always. I always wanted to do something or the other because I believe when you see dreams with the eyes open, not with your eyes closed. So, and I used to tell my husband, I used to do something. And my husband was quite well off. So he said, क्या जरूरत है, क्या बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे. Then I used to find those custom books and all in my house. So one day after reading some pages and all, I said, my husband, suddenly I want to give an exam. But are you want, and that this was, I'm talking about when I was 41 years old. तो पीपल फील कि बीकॉम होने के बाद 15-20 साल के गैप के बाद वापस यू वांट टू स्टडी इज अ बिग टास्क लाइक इट्स इज इट वर्थ. Then I said, my husband, let me give it a try. Even he supported me because he's quite a knowledgeable person and he's broad-minded. So he said, okay. And I started learning from scratch those thick books, tariff books, customs tariffs act and ye and all that. I sometimes I used to curse myself कि अरे अच्छी खासी जिंदगी चल रही है. Why am I it is like पैर पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना. ये सब पेन क्यों लेना. I could enjoy life, but then no, I said no, something I must do. I always found कि I should do something. I have made for something. But then I cleared my exams and I got my customs license. I got my license after 2 attempts. And I have my own business, import export ka. And now in 2020, some things happened, which COVID happened. Again, we were all back to square one where a whole world was in their own house. Like it was like in prison type. So I was telling my husband something I want to do, I want to do something. And then I landed up in some webinar of the occult science. I don't remember who it was, 4 years back. But then that line used to, keep me chasing in dreams. I thought, I want to do something. And I started up with small courses, 5,000, 11,000 wale. But then I said, yes, I'm liking it because, if you pay a big amount and you are not able to do it, so that guilt is there always for me. I wasted money. That pinch is there. So I used to tell my kids were in college. My son had gone abroad for his master's. He had come just back. He had gone to UK. So I was saying, am I mad? But then, no, mom, you want to do something. You've been taking care of us in the house for so many years. Now you feel you want to do something, go ahead. So I was thinking, at this age, 41, I cleared those exams. After 8 years, I started at studying again for this occult science. 48 में मेरा again new journey चालू हुआ. So humble of you Which to accept that age and tell that कि मैं इस age में सीखना शुरू किया. This is the age when late 40s or early 50s people feel tired. They feel अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, nothing to do. They just want to sit and relax and watch TV. What inspired you जब आपने वो webinar attend किया? Is it that you felt this is for me or something inspired you from that webinar moving forward? Yes, I don't remember that, sir. I don't know. But that, it tickled me. That gave me goosebumps. I said, ये ऐसा भी है कुछ, ये दुनिया भी है. मुझे तो ये कुछ मालूम नहीं था. Then I said, अरे मुझे और जानना है. And every other day, I used to feel, again, I want to pursue this modality. How will I get more knowledge? फिर I used to scroll those webinars or those occult feed wale mentors जो थे. And few तो I must say, now I tell my family कि मैंने कुछ पैसे waste किए हैं because at that time I remember someone from Bhatinda or somewhere उन्होंने बोला 11 दिन का कोर्स है and they charged me 11,000 and 5 दिन में खत्म करके रख दिया. And then they said हो गया, अभी you have to do practice on your own. तो आई वाज सेइंग 11 दिन का पैसे भरे and then
सी ऑनलाइन था तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो मेरे को बहुत ऐसे थे कि मेरे पैसे वेस्ट गए. देन आई अगेन टुक हेल्प ऑफ माय किड्स. देन दे टोल्ड मी आपको मॉम. लगा घर पे जब कोई गलत सोर्स पे पैसे लगा दिया तो घर पे कुछ हमें सुनने को मिलेगा, या फिर घर पे आपको कन्विंस करना पड़ा फीस के लिए, वैसा कुछ था? यस यस यस, मुझे कन्विंस करना पड़ा. एंड पहले तो एक्चुअली मुझे भी ट्रस्ट नहीं था न्यूमरोलॉजी पे. मैं दूसरों को कैसे कन्विंस करूं कि भाई मैं पैसा, एंड गुजराती हूं तो पैसे का तो एक एक चीज का हिसाब रहता है भाई. एंड बीइंग हाउस वाइफ, मतलब आई वॉज इनटू बिजनेस ऑल्सो, बट थोड़ा जोल जोल करके मैं रखती थी. बट एक दो बार मेरे से भी ऐसा हुआ तो मैं एक बार सोचने लगी कि सच्ची ऐसी कुछ चीजें हैं, या क्योंकि मेंटर तब सब कुछ ऑनलाइन था. देन माय किड्स डायरेक्टेड मी कि मॉम फेसबुक में अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया है, उनका फोटो डाला है सर ने, मैसेंजर में पकड़ो, उनसे बात करो. दैट वे. पहले तो मुझे सेल्फ डाउट था कि मैं कर पाऊंगी, और व्हाट ही सेइंग, ये प्लैनेट्स और ये सब एक्चुअली एग्जिस्ट. पहले तो मेरे घर वालों ने भी बोला कि ये पैसा बर्बाद कर रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है, लेकिन ये पैसा बर्बाद कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग प्रेडिक्शंस छोटे मोटे एंड ऑल दैट, तो थिंग्स टर्नड अप के भाई कुछ तो है. एंड देन till now date, my kids also ask me when they, my son is a freight forwarder, my daughter is into legal of import export clearance. They ask me sometimes, मम्मी कुछ कोट करना है फिगर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताओ. एंड आई टेल देम एंड इट वर्क्स. एंड आफ्टर हाफ एन आई कम्स, दे कम एंड टेल मी वो भाव पे नहीं, बट तूने जो भाव बोला ना वो उस पे चल गया. आई सेड दैट इज लकी नंबर फॉर यू. So things are working, and it took little time for me to convince my house people, but they never said no. They said you're busy and you want to do and you're liking it, you're pursuing your passion or something. But first दो तीन जन ने धोखा दिया तो मुझे भी लगा के झटका कि अभी भाई पैसा वेस्ट जा रहा है, अभी सोचना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. So it takes little hard to get the trust of the Yes. family members, you mean to say, when there is a risk of getting duped in few of the courses where you are spending a lot of money. So what was your feeling at that time? Mixed emotions? Mixed emotion. Yes, yes. Mixed emotion. And that okay, next course which I'm going to do, is it What? genuine, worth जितना पैसा भर रहे हैं उतना. एंड देन क्लैरिटी भी था, क्योंकि सम पीपल न्यू सो मच बट दे वर नॉट एबल टू डिलीवर. एंड तो some had that big advertisements and all that stuff कि we got carried away and we put that hefty amount इधर उधर से जोल करके छुपा ये करके all that stuff. So then I understood कि भाई, then I thought कि I'll take a stop, I'll take a pause, and first I'll decide where I want to go, because this occult science is so deep. It is astrology, it is Vastu, it is face reading. So then I decided by numerology first, and when I feel I've done the masters or ekdam in-depth knowledge आ गया, then I'll go for something else. So that full stop, I had to take a stand ke bhai abhi I have to stop somewhere, and only if numerology to, because so many things came in pouring in between. So we got carried away also. Can you share some experience of yours, Sonal ma'am, that when you were starting with learning numerology, or you have your own company, that Sharon Numerology Solutions, right? Sharon, Huh. yeah. So when you post on that, or when you share some tips, were there any resistance from people, or did they accept it? Any suggestions you got from your extended family or your friends, neighbors? What kind of a reaction you got? See, I feel universe gives you, just as disease होने पहले या बीमारी heart attack या होने पहले body gives you signals, symptoms. This, I feel I was born for this field, because the way universe accepted me and I got universe ka blessings and this thing, touch wood till now, no negative comment in my Instagram, this page, or feedbacks पे, and people, clients voluntary give सामने से. When I tell them कि भाई आप satisfied हो, आप happy हो, तो आप फीडबैक देना. हाँ हाँ, आप जब बोलो तब दे देंगे, हम अपने आप दे देंगे. सो आई फील इट इज, भाई आई डोंट, पीपल आर देयर टू हेल्प मी, पुश मी इनटू दिस, कि आप सही जगह पे आए हो.
And Right. most of the money I use for charity, for Hmm. animals. Hmm. एनजीओ एक है, वहां आई गिव. स्ट्रीट डॉग्स है, उनका भी टेक केयर. तो आई फील एंड आई एम blessed. So there's no problem with money. My kids say we don't want your money. My husband says nothing to do with your money. So half of the money, most of that I've done in charity and all. So I feel I'm doing a noble job. Noble job. And plus मुझे चैन की नींद आती है, and I feel I'm very happy एकदम कि something is being done. एंड सबके दुआएं भी मिलती है. Yes. When you are completely satisfied from within, yes, you have done a good हम्म. work. अगर हम डाउट में रहे, अरे इसका काम किया है, इसको रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, that kind of a feeling should never come. When you know that this skill works, this is a science and it works, and when you do it with the right intention, obviously the person gets benefited. Benefit. That's so true. Any personal impact of yours during or after numerology? When you learned numerology, did you apply in your life something for your personal things? Did you apply? Yes. First remedies I tried on myself. I'm that person who's on experimenting. First, when I joined numerology, somebody had suggested me name 5 pe leke jao. And I took my name and it kept swirling. Then I got back to my original name. I tried things on myself on 5 and 6. I tried because some sirs ke certificate mein I find that double L. I had changed my name. So then I found that my original name is blessed, and that's why I've reached this journey. See, even But same thing. then, I'm yeah. also blessed with my original name, even before marriage or after marriage, as we South Indians add the initials. So the total Hmm. is the same before and now. And I feel that yes, the name is given by nature, by my parents. So I didn't find any need to change my name till date. Maybe I might do it sooner. कि अपने में न्यूमरोलॉजी का एक्सपेरिमेंट मैंने अपने आप पे नहीं किया है, सो आई थॉट लेट मी डू इट इन द कमिंग टाइम. बट यस, दी साइंसेस डेफिनेटली वर्क. और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपने कंसल्टेशन देना शुरू किया, व्हेन पीपल स्टार्टेड कमिंग टू यू, डू यू रिमेंबर एनी ऑफ योर केस स्टडीज व्हिच यू फेल्ट दैट यू वर रियली हैप्पी हेल्पिंग देम? Yes, at first I was a bit nervous, but when it came and I started decoding this thing, date of birth वगैरह, तो अपने आप एक एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हो गई कि आई स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स which had recently happened to them or which is going to happen. So, and this I came to know things which had happened, they admitted कि भाई ये मेरे साथ हुआ है. And which I told them कि is going मतलब ये हुआ है. And after few days they were saying आप जो उस दिन आपके बता रहे थे ना, वो अभी मुझे लग रहा है. So that time I found कि I have a special power or something which I can see the foresee or what foresight it is. I have discussed this thing to my mentors also. If there was an earthquake, or I don't know if it is right to discuss on this platform, I had made few calls to my few mentors, which I found कि उनके साथ मेरा एक alignment है या कुछ है कि मैं बात कर सकती हूँ. तो I used to see this डेड बॉडीज और कॉप्स टाइप. तो मैंने सर को बोला कि मुझे ये सब थोड़ा थोड़ा नींद में दिख रहा है, व्हाट इज इट. सो सर ने भी बोला कि मुझे नहीं मालूम व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, और मुझे कुछ मालूम नहीं था. मैंने कुछ बोला था ये मतलब क्या आगे बता नहीं पा रही थी, इतने दिख रहे थे. एंड आफ्टर अ वीक और सो वो मोरक्को में अर्थक्वेक वगैरह आया था, लॉट ऑफ पीपल डाइड. देन आई टोल्ड सर, one of my sirs, he is very famous, कि अभी वो बंद हो गया मुझे दिखना. सो इट वॉज दैट इंडिकेशन. पर वो चीजें क्लियर नहीं है, कुछ निकलने का बाहर बाकी है, कुछ शायद मेडिटेशन या कुछ करना होगा, और पता नहीं. आई डोंट नो, दैट यूनिवर्स विल गाइड मी. मुझे क्योंकि ये जर्नी में भी यूनिवर्स और भगवान का ही हाथ है, भगवान, यस. क्योंकि ना मैंने कभी सुना था ना देखा था ना कुछ. इसमें आ गई और मैंने बहुत सारी मोडालिटीज करके बैठी हूं मैं. And touch wood, people are giving me good response, feedback, people are happy. तो आई फील कि भाई ये ऊपर वाले का हाथ है इस, क्योंकि ऊपर वाले के पत्ते के बिना कुछ अपना कुछ नहीं चलता है. There is always a right time to come into the right space.
जैसे आपने बोला कोविड के टाइम पे आपने कोई वेबिनार देखा एंड यू गॉट इंटरेस्टेड विद दिस occult sciences. During those time, as you said, you were only a homemaker. Was it difficult to attend classes and take care of the family and of course cooking and other things? Was it difficult to manage? How did you manage yourself in that phase? डिफिकल्ट मतलब मेरे बच्चे छोटे तो नहीं थे, कॉलेजियन थे। एक तो बाहर गया था पढ़ने, वो वापस आ गया था। देन माय डॉटर वाज जस्ट 2 इयर्स, उससे छोटी थी, तो इतने वो प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, टू प्रैक्टिस आई यूज्ड टू वेक अप लेट नाइट्स। ऑफन माय हस्बैंड यूज्ड टू गेट अप फॉर वॉशरूम, और रात को 1 या 2 बजे या समथिंग, देन ही से ये कहाँ गई, एंड देन ही विल फाइंड मी इन सम अदर रूम। बोलते क्या कर रही है तू? मैं बोला वो प्रैक्टिस कर रही है, आज जो सेशन था ना उसका मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बोलते अरे अरे सो जा, सुबह कर। मतलब सुबह नहीं मिलता है टाइम, फिर ऑफिस एंड ऑल दैट स्टफ। तो थिंग्स हैपन कि आई यूज्ड टू डू रात को प्रैक्टिस ऑफ न्यूमरोलॉजी। दैट इज व्हाई आई फील न्यूमरोलॉजी हैज गॉन इनटू द ब्लड डायरेक्ट, क्योंकि इतने साल से और बहुत सारे प्रैक्टिस किया है, सो दैट वे थिंग्स वेंट। बट मैं करती थी ऑन एंड ऑफ, जितना टाइम मिला रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके नोट पॉइंटर्स बनाओ, उसके नोट, एंड वो देखते रहो, वो देखते रहो, एंड देन वो समझो, एंड फिर वो मैं कनेक्ट करती गई टू अ पर्सन। फर्स्ट आई यूज्ड टू आस्क द पर्सन डेट ऑफ बर्थ। नाउ व्हाइल टॉकिंग टू हिम आई आस्क देम, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है क्या? आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 है क्या? आपके डेट ऑफ बर्थ में ये है? तो दे से यस, Yes. कुछ है। यस, आई हैव स्टार्टेड, एनर्जीज हैव स्टार्टेड, कि मैं उनको सामने से बोलती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये है क्या, एंड देन कुछ नहीं तो डेस्टिनी मिल जाता है। और अभी तो मैं ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है कि मैं उनके गाड़ी नंबर तक पहुंच गई हूँ। पता नहीं कैसे क्या, आई डोंट नो, सब ऊपर वाले का। बट मेनी टाइम्स व्हेन आई टॉक टू दैट पर्सन आई आस्क देम, गाड़ी में आपके ये नंबर्स है क्या? नहीं तो गाड़ी का नंबर किसको याद रहता है, बट दे आस्क देम कि आपकी गाड़ी में ये नंबर्स है क्या, या हाउस नंबर है, तो देन मेनी टाइम्स इट एग्रीज। पर ठीक है, रिसर्च चालू है। Sunuji, I want to ask you one more thing that uh, how does numbers play? Because nowadays we see a lot of information available on the social media regarding numerology and other modalities of occult sciences. How do you uh, rate or how do you describe this, that how numerology works for anybody? And is there any time frame that person starts to see the changes in or his life after doing some remedies or a name correction? How does number play important role in anybody's life? Numbers play a very important role because नंबर्स, जो आप डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स रहते हैं, वो उनके आजू बाजू उनको रियलाइज हुए कि नहीं हो, वो उनको नंबर्स, उनके फॉर्म, कॉलेज के फॉर्म, उनके कुछ कहीं तरह में से वो नंबर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ में है या वो है, वो कनेक्शन उनको दिखता है, whether they रियलाइज और नॉट। Realize. और वो नंबर उनके फेवरेबल नंबर्स रहते हैं, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर, जो भी आप बोलो। बट मैंने देखा है कि नंबर्स में ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हम नेम करेक्शन देते हैं। वो भी उसका प्रोसीजर है कि वी मेक देम राइट, एंड काफी टाइम के बाद वो एक्टिव होता है। बट मेनली आई टेल माई क्लाइंट्स के कर्मास अच्छे करो, और थोड़ा चैरिटी करो, और अपने, आई आई डोंट बिलीव कि आप भगवान के मंदिर में आधा घंटा पूजा पाठ करो और आपके घर वाले दुखी हो, वो नहीं। आपके घर वालों का आप ख्याल रखो, सी दैट यू डोंट हर्ट एनीवन और समथिंग, एंड पूजा पाठ वगैरह करो, दैट इज ओके। बट एकदम ऐसा मत करो कि अपना घर के इग्नोर करो, घर के प्रॉब्लम्स या घर की जो भी है। तो घर का सपोर्ट मिलने से ना, आप एकदम हट के चीजें करते हो। व्हेन यू हैव दैट फैमिली सपोर्ट ना, Support. यू कैन डू वंडर्स। As you're talking about support, can you just give us an example? What are those numbers which gives anybody a support in their life? कौन से ऐसे कुछ mandatory numbers हैं जो चार्ट में हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा? I feel 1, 5, 6, 7 are must in life in everybody's. If you don't have 5, 6, 7, you should do remedies, because I have found 7 is a very lucky number. जिसके पास 7 वो ब्लेस्ड है, वो चैलेंजेस फेस करने में उनके पास अलग ही ताकत आता है। 9 is a humanitarian number, where the person who is 9
वो जब ह्यूमैनिटेरियन या जॉब्स या किसी को हेल्प नहीं करेगा, ही विल नॉट रीच सक्सेस. वंस द 9 number person becomes selfish or thinks about himself, वो एक सक्सेस नहीं पहुंचेगा. एंड 3 नंबर ऐसा है कि उसको सात्विक और इट इज Yes. फुल ऑफ विजडम. तो वो जो 3 नंबर है, थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन रहेगा, एंड इसको थोड़ा ईगो साइड पर रखने के बाद अगर ही और शी ट्राइज टू हेल्प, 3 will touch heights. Hmm. Success. The sky is the limit, you can say. तो ये कुछ नंबर्स है जो यूनिवर्सल नंबर वी कैन से. 3, 5, 3, 9, मोस्टली आई से 7. दे आर वंडर्स. बस वो अपनी एक पहचान, अपने जो पॉजिटिव ट्रेट्स पे काम करे ना, तो दे विल डू वंडर्स. As you said, number 1, 3, 5, or 9 are more powerful and supportive numbers. What if a lot of people you see that they are scared of number 4 or number 8? How does those numbers play a major role in our life? It's not necessary that Every if somebody has a 4 or 8, they'll have a struggleful life or something. So, can you just throw some light on this? आई विल से 2, 4, 8 थोड़ा स्ट्रगल वाला नंबर है. बट देखो, हर नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है. सो वंस यू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एज लाइक टू, टू इज द शेप इज हैविंग टू, वो बैंड है, तो Yes, इट इज मेंट फॉर actually, गिविंग. giving. Yes, अगर जिस दिन टू, लाइक आई एम 20, टू मेरे हाथ से, इट इज अ गिविंग हैंड, बी इट गेस्ट वट एवर. तो मेरा हाथ ऐसा है कि वंस आई बिकम सेल्फिश, तो giving. वो प्रॉब्लम क्रिएट कर. बट वंस अपना जो ट्रेड्स, पॉजिटिव ट्रेड्स पे काम करते हैं ना, देन इट विल गिव यू ग्रोथ एंड सक्सेस. सेम एज 4. 4 Hmm. इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल दैट स्टफ. बट जब जिस टाइम 4 नेगेटिविटी में गया, तो इट विल नॉट रीच सक्सेस. हाँ, Yes, थोड़ा प्रॉब्लम्स तो इनिशियल सब चीज में प्रॉब्लम आता है. विदाउट प्रॉब्लम लाइफ में, लाइफ इजी नहीं रहा है किसी के लिए भी. कंफर्ट जोन के बाहर निकलो बाहर ना, निकल. तो ही यू गेट. या तो 4 और 8 को थोड़ा ज्यादा वो करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. बट इन एंड यू विल फाइंड ऑल द बिग शॉट्स 4 and 8 वाले. आप वॉरेन बफेट, कितने भी बड़े 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 बड़े. बिग शॉट्स Yes, हैं, उनमें देखो अब 8 नंबर प्रोमिनेंट है, वो 8 ही उनको एकदम हाइट ascending. पे और लेके गया है. बट Yes. इनिशियल स्ट्रगल तो रहती है, किसी को कम किसी को ज्यादा. Yes. You say nowadays a lot of people are coming and learning and making this industry a really a best one to be here. So when somebody is starting with the career in occult sciences like Vastu or astrology or numerology, what do you think should be their intention to proceed with the practice? देखो, आजकल एवरीवेयर यू विल फाइंड, इन गली, हर नुक्कड़ पे यू विल फाइंड. बट आई फील पीपल हु, देखो, डॉक्टर के पास कौन जाएगा जिसका पेट Sure. दर्द हो या सर दर्द हो. सो वन पर्सन और ए क्लाइंट इज कमिंग टू यू, टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो उसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू डू द कट थ्रोट. इफ यू हैव हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. Very dangerous. प्लीज उसके नेम के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसकी जिंदगी और खराब हो जाएगी. तो अनलेस एंड अंटिल यू हैव नॉट डन फ्रॉम द बेस्ट, एंड आई विल से everybody is still learning in this field. I cannot, I believe in that statement ke everybody is still learning. No sir can claim No, that sir. मैं 12 साल 20 साल का भले एक्सपीरियंस हो, लेकिन अभी मुझे सब आता है. No, every day comes up with new developments and new Definitely. beginnings. So everybody is learning. So, and doing from so many mentors, I gained a lot of knowledge. But then when I applied to few people, ओनली कुछ कुछ जो मुझे समझ में आया, थियोरी पार्ट वो एप्लीकेबल, बट ज्यादातर मैंने अपने रिसर्च से और इससे ढूंढा है मैंने. जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास कौन सा नंबर है, तो कौन से नंबर है वो Yes. जो ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, वो कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई हीलर्स बनते हैं, वैसे. So numbers are so powerful that even their profession can be decoded by their प्रोफेशन. या numbers. So
When you started to learn after that, when now you start going for some seminars or to give some presentation, or I think you have invited as a speaker also for one or two events, how does that feel when you get that recognition after uh, starting just a few years before? सी आई वॉज नॉट ए स्पीकर, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बट अभी 4 सेशंस मैंने मेरे को हमारे गुजराती लोहाना महिला मंडल ने बुलाया था, रोट्रैक ने बुलाया था, रोटरी ने बुलाया था, और एक लायंस क्लब ने बुलाया था. देन आई इवन आई डिडंट नो आई हैड द टैलेंट के विदाउट लुकिंग और प्री करते हैं ना को वो तैयारी करते हैं वो सब, विदाउट दैट आई कैन स्पीक. मुझे भी नहीं मालूम था कि ये टैलेंट मेरे में है. आई वॉज बेसिकली शाई इंट्रोवर्ट. बट अभी ये चीज में जाने के बाद नॉलेज इतना आ गया कि आप बिना देखे बिना, इट्स लाइक दैट कि बिना कुछ पढ़े या बुक सामने नहीं रहता है फिर भी आप बोल सकते हो. बट स्टिल आई एम लर्निंग. या Yes, थैंक ma'am, यू. go ahead. नहीं नहीं आप बोलिए, कुछ नहीं I बोलिए. want to ask, how does a name play a role in anybody's life? नेम प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर नेम का अलाइन, जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट होता है, एक पहिया अगर ढीला हो या लेफ्ट में गाड़ी जाती है तो वो थोड़ा दिक्कत देती है. जैसे अगर डेस्टिनी नंबर, जोडियक नंबर और बर्थ नंबर के साथ अगर नेम अलाइन हो गया तो इट यस दैट इज जस्ट द पर्सन विल डू वंडर्स, यू कैन से. Yes, many people for naming a newborn baby or selecting a new name for anything, what they see is they see astrological nakshatra also, and they see as per numerology also. Do you think combining both is more effective, or only through numerology we can give a good name without checking any nakshatras? Through numerology you can do, but I feel astrological because date of time भी मालूम पड़ जाता है, तो astrology also we मतलब we Yes. can make a chart of it. Time अगर नहीं मालूम है तो numerology is enough. But numerology, if you combine astrology also and the placement of alphabets in a name, positive alphabets का naming डाला, and some chronology also is added to it, it's cherry on a cake. So I feel कि name, the alphabets, the total of the name number, everything if you take into consideration and then you give the name to newborn babies. Even a few have consulted me for when it doctor says for cesarean child. They had recently had 2 cases in Gujarat. One I remember very well from Rajkot. That lady had given after 8-9 months feedback. So I was in UK for holidaying. So that time she called me up and she said 4-5 दिन में मेरी डिलीवरी होने वाली है and I have problems with the baby. So doctor has told कि आप सिजर के लिए तैयार रहो. So I told कि I calculated last few days का birth number, destiny number, zodiac number जो भी था, and then I gave out the best date. तो मैंने बोला डिलीवरी सुबह के टाइम में करवाओ एंड ये डेट में पॉसिबल हो तो कीजिए. तो मतलब हम लोग हमारे जो डॉक्टर है उनको पूछती हूँ. वो जो लेडी डॉक्टर थी गायनेक थी. तो लेटर इन द इवनिंग हस्बैंड एंड 2 दिन ही बाकी थे तो हस्बैंड कॉल्ड मी अप के मैम मेरी वाइफ को तो एडमिट किया है लेकिन आपने बोला है 2 दिन के बाद करने के लिए, तो दैट वे. तो ऐसे 2 दिन तक हो सकता है. बोलते हाँ एडमिट किया है, टेस्ट वेस्ट करेंगे लेकिन 2 दिन के बाद ही करेंगे. एंड टच वुड मैंने जो फर्स्ट और 1 और 3 का कॉम्बिनेशन दिया था, इट वर्क वंडर्स. एंड आफ्टर 8 months शी इज टेलिंग मी, शी टोल्ड मी कि दे हैव बॉट अ न्यू हाउस. They have shifted to 2-bedroom flat. Old house they have given a smaller house it was. They have given it for rent and company ने गाड़ी भी दी है and full स्क्रैच से उन्होंने पिन भी नहीं लिया है जो न्यू ओल्ड हाउस से, सब न्यू बसाया है. I said that girl is having Rajयोग. She got a daughter. Rajयोग. I said ये combination मस्त है. And then she asked me for the alphabets also. I told her ये alphabets लेकिन आप लोग ढूंढो क्या नाम बैठ रहा है. And then I rest time there. I will see the counting and the name correction part. I will do it. And I gave the placement of alphabet also. A short and they wanted a short and sweet name.
which had उसके पापा का भी नाम चाहिए बेटी को and मम्मी का भी नाम, combination type. So I helped them out. And after 8 months, she called me. I was wondering, ये 8 महीना गायब थी, आप कहाँ से आ गए? And what happened? मतलब एक बार मुझे लगा कि अरे, and then she told me कि it is working wonders and we are all very happy. And wherever the child goes, 8 month वाली भी कुछ ना कुछ चॉकलेट, कुछ ना कुछ उसको मिलके आ जाता है। सर ये बात, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं भी लड़की जाती है, कोई भी उसके साथ खेलने जाता है तो कुछ ना कुछ देता ही है। बट उनकी किस्मत बदल गई। सो दैट वे आई फील कि भाई आफ्टर दीज इंसिडेंट्स इवन आई फील कि भाई स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स प्ले अ वाइटल रोल इन योर लाइफ। एंड मोर ओवर द अल्फाबेट प्लेसमेंट भी सही बैठ गया एंड नेम इसमें नेम नंबर भी सही बैठ गया जोड़िया के साथ और उसके साथ, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। Yes. That's when these sciences become very, very powerful when used at a right time, right place, and with a right alignment, including the placement of the letters in a name. लेटर्स Yes. So, how do you manage your daytime, your schedule, your daily routine? Something, tell something about that, about your daily routine. How is it? before I have my business, I have my own company. I take care that of that also, but my husband takes care more of it because I have been engrossed in this or being carried away. You can say ये attract इतना feel किया है कि I was waiting for this which I didn't know. Last 4 years मैं became so मतलब I've learned so many modalities कि I feel sometimes कि 53 now I am कि this age में I can do something. I was shocked. शायद इतना ही मैंने वो पैशन या रखा होता ना तो मैं स्कूल में स्कॉलर या टॉप रहती। सो बट देन आई फील कि भाई ये लाइन मेरे लिए वेट कर रहा था एंड आई वाज मेड फॉर दिस लाइन। माय हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ हिज कंपनी एंड माय कंपनी आल्सो। माय किड्स हैव देयर ओन कंपनी, सो दे आर हैविंग द एलएलपी, so they take care of their own. But my house people help me a lot. They support me. Now they are in full favor के भाई तुझे कुछ है? अच्छा अच्छा, my kids, before I had a net issue. So I just called him. I am very weak in this, in my destiny 4, but I have no knowledge of ज़्यादा knowledge of computers और ये. So I immediately called him. So he came saying net issues है, ये problem है, connect with this. I said you do it. So now at one call, all Russian comes. So I feel very, and बाहर भी respect मिलता है, and घर पे भी it's just like दोनों हाथ में लड्डू है। Yes, and you've worked for it, and you've worked for it, And and work you've for it. given your Yes, time for it. You've given your time for it. Yes. I have earned the respect. I have earned respect and name and fame for this because I've worked very hard for this. Yes. Do you want to share something for those people who don't know what to do, जिनको पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है? They feel हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. They keep on cribbing, and I feel you are the right person to share some of your experience, to share some guidance based upon your learnings. Anything that you want to share with people like that, जिनको कोई clarity नहीं है, what they can do to get clarity in life? सबसे पहले. One message I would give to everyone, especially the ladies. I feel ladies are multitasked. They can handle the house, they can handle the kids, they can handle the mother-in-law, they can handle everything. I've seen many ladies doing office, घर का संभालना, in-laws संभालना, husband, all balanced life. But I feel सबको भगवान ने एक talent दिया है, वो पहचानो, नहीं तो अपना पैशन डेवलप करो। बिकॉज आफ्टर सर्टन टाइम किड्स विल ग्रो अप, दे विल बी बिजी इन देयर लाइफ। एक टाइम के बाद यू विल फील कि लाइफ इज जस्ट नल एंड वॉइड। तो वंस आप अपना पैशन पहचानो, अगर इट इज ओकल्ट बी इट सिंगिंग, वॉट एवर इट, एंड कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, प्लीज वर्क हार्ड फॉर इट, earn it, and you come out of your comfort zone because things were not built in a day. Even Santa comes with a clause. So I just want to give a message कि कुछ भी चीज पाना हो, I think there's a Shahrukh Khan's dialogue is there. पूरी कायनात पीछे पड़ जाए, मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड देन द यूनिवर्स, एंड आई फील यूनिवर्स सिग्नल देता है कि आप इसके लिए बने हो या ये चीज आपके लिए, यू गेट एप्रिसिएशन। बट वो थोड़ा ध्यान में रखो और अपना टैलेंट जो भी है
परस्यू करो, आप अपने फील्ड में वंडर्स करोगे. So I'm thank not you so saying much. everybody should go to yeah occult, but अपना अपना पैशन या अपना जो भी Yes. है इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट परस्यू करो, फिर देखो. ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट नोट किया. इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी हैज टू कम टू ऑकल्ट. इट इज दैट अंडरस्टैंड योर इनर स्ट्रेंथ, योर ओन पैशन. बिकॉज पैशन नहीं है तो आप कोई भी काम स्टार्ट करो, कुछ दिन करोगे, देन इट विल फेड अवे. इफ यू हैव पैशन फॉर समथिंग और डेवलप एन इंटरेस्ट एंड डेवलप अ पैशन फॉर समथिंग, it might take a time, but once you develop that passion, you are there and you will have the whole world to explore in that field. एक एक पैशन रखो, एक ड्रीम रखो, और वो ड्रीम के लिए हाथ पैर मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. फिर you will find success, and then you will get name and fame, and you after certain time you will find universe is also guiding you, that you will Yes. meet the right person, the right Right. mentor. Everything will be like, the universe is pushing you, okay, by you are in the right direction, you are meant to be here. Yes. Yes. Thank you so much, Sonalji, for coming here, sharing so many of your insights, how you came to this field and how you started. Really thankful for your time, and thank you so much for coming. Thank you, Krishna Ji. I also know you in person. You are no less a warrior in life. You are a true warrior. And you are also a wonderful person, and you are also doing well in all these modalities. God bless you in abundance. Thank you very much. Grateful, blessed. Thank you to have me in this platform. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sonalji, for those wonderful and kind words. That is what motivates me. Yes, we all have to go through all ups and downs in life, all challenges, but there is something to us which is our inner strength. We just have to hold on to it and following our right path. Thank you, everybody, for watching this wonderful podcast. And I request everybody to watch this and take your inspiration from Sonal ma'am, whatever she has said. She said, at the age of 50, if she can do, anybody can do. Anybody can find their passion. Age is not a number. So keep watching our podcast. Write your comments and feedbacks in the comment section. Any other topic which you want to see, any other guest which you want me to bring in our podcast show. Thank you, everybody, for giving so much appreciation for this show. Will bring you more inspirational journeys, more insights of occult industry. Thank you. Namaste. Thank you.